Students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran, lecturer at Virtual University of Pakistan. I welcome you all to the lab number 11 of our Introduction to Python Programming practical course. लास्ट सेशन में हमने डाटा स्ट्रक्चर सेट्स और टपल्स वगैरह की बात की थी और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सेट्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक intersection, union, or finding the unique values, how these things are implemented in the Python programming. आज के सेशन में हम वो चीज़ें थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जहाँ हम सेट्स डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आज हम एक नया स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है डिक्शनरी। हम ये भी देखेंगे कि हम डिक्शनरी को कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन थी लास्ट सेशन की उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि सेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमने स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की हुई है और हम ये जानना चाहते हैं कि यूनिक स्टूडेंट्स इसमें कितने रजिस्टर्ड हुए। We don't want to get the list of all the registered students, rather we want to check how many unique students have performed a specific kind of registration. तो उसके लिए हमने एक सबसे पहले लिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेल के लाइन नंबर 2 के अंदर। तो इस लिस्ट वेरिएबल का नाम हमने रखा है रजिस्ट्रेशंस। इसके अंदर जो हमने नेम ऐड किए स्टूडेंट्स के वो है अली, जैन, सना, again Ali, Hamza, and again Sana. You can see that Ali and Sana are repeated here. So if we want to find out that which are the unique students who have performed this kind of registration, we will use the set operations on this list. तो सबसे पहले हम जो ये हमारे लिस्ट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट डेटा टाइप के अंदर। उसके लिए हमारे पास जो कोड स्ट्रक्चर है वो है लाइन नंबर 3 के अंदर। हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप सेट होगी और इसको हमने असाइन किया है द कन्वर्जन ऑफ लिस्ट टाइप इनटू सेट। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आपके पास आएगी उसके अंदर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स प्रिंट आउट हो जाएंगे, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जब आप यूनिक रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारे पास एक सेट बना है उसका आप प्रिंट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी डुप्लीकेट नेम नहीं है। ये इस वजह से है कि जो सेट डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। सो दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द सेट डाटा स्ट्रक्चर। एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको देखने के काबिल है वो ये है कि ऑर्डर जो है वो लिस्ट के अंदर मेंटेन होता है, लेकिन जो सेट डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आइटम्स का ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन नहीं होता। आइटम किसी भी ऑर्डर में हमारे पास डिस्प्ले हो सकते हैं। सो कीप इट माइंड एंड डोंट वरी if the items are not displayed in a correct order of insertion. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर या इस डाटा के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये हम देखने के लिए जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है पाइथन का वो है इन। इन का जो कीवर्ड है ये यूज़ होता है टू चेक द मेंबरशिप ऑफ एन आइटम इन अ सेट और इन अ लिस्ट। सो लाइन नंबर 3 पे हम यहाँ चेक कर रहे हैं इज जैन रजिस्टर्ड। हमने वैल्यू दी है जैन की और
हमने डायरेक्शन दी है कि then in unique registration. So basically this is checking a condition. Either then is present or exist in the unique registration list or not. If it is present in this unique list, then it will return the true value. Else it will return false value. Secondly, हम चेक कर रहे हैं is एसन रजिस्टर्ड। तो हमने एसन की वैल्यू दी है और हमने ये कहा है एसन इन यूनिक रजिस्ट्रेशन। तो हम चेक कर रहे हैं आया कि एसन भी इस यूनिक रजिस्ट्रेशन लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर ये मौजूद होता तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता, और अगर ये एब्सेंट है इस लिस्ट में से तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। As you can see that the then is present in the list of unique registrations. So our first statement will print true, and you can see its output here. Is then registered true. Secondly, we are testing the SN. If we check this list, that is the list of unique students, here there is no name as SN. So technically it should return false, and in the output you can see that it is returning false, which means that SN is not present in the list of unique registrations. Next we want to check that which students are present in class A, which are in class B, and which are those students which are taking class A and class B combined. And we also check that which students are taking only class A but not class B. Similarly, we can also check that which students are only in class A or only in class B. So for this purpose, we can use different operations of set data structure that we have discussed in our last session, and we are repeating here for the sake of complete understanding. So we have two sets here. A set A that contains the student's name as Ali, Sana and Hamza, and we have another class that is class B in which the students Sana, Ahsan and Tariq are enrolled. Now if you want to check that which students are enrolled in both classes, class A and class B, for that purpose we will use the intersection operation. Let me revise you that intersection operation returns the items which are present in both sets. For example, if we look at the values Ali is present in class A, but Ali is not present in class B. And if we check the Sana is present in class A as well as in class B. So if we check the Hamza, and we can see that Hamza is only present in class A, but it does not exist in class B. So our this intersection operator will return the name of Sana by indicating that Sana is the only student that is enrolled in class A as well as in class B. Further, if we want to check that which students are only taking class A, by subtracting all those students which are present in class B. For that purpose, we use this difference operator. These operators excluded the items that are present in class B as well as in class A, and it will only returns the elements which are only present in class A and does not exist in class B. Let's check our data again. Here we can see that Ali is present in class A and it is not present in class B. Sana is present in class A and B. So
it will be excluded in the final list. Ali will be included in the new list, which indicates that this is the student that is present only in class A. Similarly, if we check the Hamza, Hamza is also present only in class A. It does not exist in class B. So when we perform this operation of difference by subtracting the elements of class B from class A, it will produce a new set that will contain the names of Ali and Hamza only. And you can see that here. Students only in class A are Ali and Hamza. Further, if you want to check that which are the students unique to class A and class B both, we don't want to set the repetition or we don't want to get the repeated student's name. For example, if Sana is present in class A as well as in class B, then we want only one sample or one instance of Sana and we will remove the second instance of Sana that is also in class B. So here we will use the operation that is the union of the sets. Union of the sets will combine the unique elements from both sets and it will generate a new set that only contains the unique elements or the items. So in this case, the Sana will be counted as, as once and it will be skipped while counting in the second instance in class B. So when you see the output here, you can see that all unique students, Ali, Sana, Ahsan, Tariq and Hamza. Here Sana is present only one time and its second instance is removed automatically due to the operation of this union. And this is called the union operator here. Next, if we want to check that which students are disjointly taking the class A or class B, but they are not in the both classes. So basically this is the inverse of the intersection operation, which tells us which students are commonly or combinedly taking the class A and B. Conversely, if you want to check that which students are taking only class A and which students are taking only class B but not in both classes, for that we use the symmetric difference operator here. It will return a new set that will be consisted of students which are present either only in set A or only in set B, but there will be no item in the newly created set that is present in both class A and B or that is shared by both classes. So there will be no sharing, and in the output you can see that student in either but not both Hamza, and you can see in the class A Hamza is only class A, Ali is again only in class B, Hassan is only in class C, and similarly Tariq is also only in class B. You can see that Sana is removed here because it is common in both classes. So we have removed this person by using the symmetric difference operation. I hope this point is clear to all of you. This was all about the set operations, the applications of set data structures. Now we will discuss the new data structure that is available in Python and that is known as the dictionary. ये बहुत ही आला और एक उम्दा किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने में प्रोसेस करने में हेल्प देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जो कि जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका सिटी है, एटसेट्रा, उसकी डिग्री भी हो सकती है उसके अंदर।
तो ऐसे डाटा को मैनेज करने के लिए हम डाटा डिक्शनरी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें रिट्रीवल भी फास्ट चाहिए, उसकी अपडेशन भी फास्ट हो, और उसकी जो डिलीशन है वो भी हम इजीली कर सकें। सो वी कैन एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द की। सो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो फर्स्ट जो होती है वो उस डेटा की होती है। एंड द की इन अ डिक्शनरी must be unique. We cannot repeat the same key again and again. दूसरी चीज जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होता है डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और इसके अंदर एलिमेंट ऐड करूँ इस डिक्शनरी के अंदर, आप 301 डॉक्टर गुलजार, और it is also taught by the Dr. Hassan.